இந்தியாவில் ஜாதிகள். ஒரு சராசரி இந்துவோ ஏன் ஒரு சராசரி அமெரிக்கனுமே இந்திய கிராமங்களை பற்றி யார் பேசினாலும் பேரானந்தத்தில் திளைக்கிறான். அவன் அதை ஒரு லட்சிய சமுதாயமாக கருதுவதால் அங்கு நிலவும் உண்மையான நிலையை உங்கள் முன் எடுத்து விளக்குவது நல்லது என்று நான் கருதுகிறேன். இந்திய கிராம சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மிக அதிகம். அங்கு இரு பெரும் பிரிவுகள் உண்டு. ஒன்று உயர்ந்த ஜாதியினர், மற்றொன்று தீண்டத்தகாதவர்கள். உயர்ந்த ஜாதியினர் அங்கு ஆளும் வர்க்கமாகவும் செல்வந்தர்களாகவும் வாழ, தீண்டத்தகாதவர்களோ அவர்களுக்கு அடிமையாக வாழ்கின்றனர். இந்த நிலை பிறப்பிலேயே அமைந்து விடுவதால் அதிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது. இந்து அல்லாத மற்ற மதத்தாரிடமும் இந்த ஜாதி அநீதி இருக்கிறதா? எஸ். எங்கள் இந்துக்கள் இந்த கொடிய விஷயத்தை மற்றவரிடமும் பரப்பி இருக்கிறார்கள். ஜாதி என்ற பேய் தலைவிரித்தாடும் நிலம் எங்கள் இந்திய சமுதாயம் என்று கூறுவேன். நீங்க என்ன ஜாதி? மகார். இனி கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கிறேன். Some say Hinduism, the religion of over 1 billion people, is the world's oldest religion. Hinduism, the religion of over 1 billion people, is the world's oldest religion and probably the most confusing one to non-Hindus. Some say it isn't even a religion, more a way of life. Hindus themselves call it the Sanatana Dharma, the eternal tradition. So, what is Hinduism? Does YOLO apply to them? And who is this elephant guy? Well, let's find out. Hinduism is the world's oldest active religion. It's the result of the merging of the ancient Indus Valley civilization and the nomads that came into India around 1500 BC. Some scholars say it could even go back many more thousands of years. But we won't delve too deep into dates, because dates in Hinduism are 1500 BC. Hinduism is the world's oldest active religion. It's the result of the merging of the ancient Indus Valley civilization and the nomads that came into India around Hinduism is the world's oldest active religion. It's the result of the merging of the ancient Indus Valley civilization and the nomads that came into India around 1500 BC. Some scholars say it could even go back many more thousands of years. But we won't delve too deep into dates, because dates in Hinduism are very controversial. But one thing is certain. Hinduism is old. Like at least 36 Betty Whites. Hinduism has been around for so long that it and the concept of India itself are inseparable. Hindu and India even come from the same word. Sanskrit was the ancient language of the Hindus, and the Sanskrit name for the Indus River is Sindhu. The ancient Persians who sat across the Indus tended to switch their S's to H's, so Sindhu became Hindu. So the people living across the river became Hindus. The Persians told the Greeks, who dropped that very not Greek-like H, stuck in a very Greek-like E to the end, and boom, India. Hinduism has a long history, but today we'll be focusing on just the core beliefs of Hindus because I don't have the willpower to animate a 3-hour-long video. Hindus are a diverse group. Some are strict, dedicating their lives to prayer, while others don't believe in any gods but still follow Hindu philosophy. To make things easier to understand, let's break Hinduism down into 7 core beliefs. So, here's my rap about the 7 Hindu beliefs. You promised you weren't gonna do the rap. Come on, you're better than this, man. Fine. Here's the regular version then. 1. Subscribe to our YouTube channel, Direct to Biography, and press the bell icon to never miss an update. हेलो गाइस, डायरेक्ट टू बायोग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा हमारे देश के नाम के बारे में कि कैसे उसका नाम भारत पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा और फाइनली इंडिया पड़ा। हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान को तोड़ो तो बनता है हिंदू प्लस स्थान, वो जगह जहाँ पे हिंदू धर्म के ही लोग रहते हो, है ना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इन सब की शुरुआत होती है भारत नाम से। आप सभी को पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखी। उस बुक में उन्होंने जिक्र किया दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का, जिसका नाम था भरत। उन्हीं के नाम पे आगे जाके हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद पर्शियंस हमारे देश में ट्रेड करने आते थे। जब भी पर्शियंस हमारे देश में आते थे तो उन्हें सिंधु रिवर मिलती थी, और इस रिवर के बारे में इंडियन ट्रेडर्स उन्हें बहुत बताते थे कि ये रिवर उनके लिए बहुत होली है, ये रिवर उन्हें बहुत बेनिफिट करती है। पर पर्शियंस की प्रॉब्लम थी उनकी लैंग्वेज और उनकी टंग, तो वो सिंधु रिवर को हिंदू हिंदू बोलने लग गए और वहीं से ओरिजिनेट हुआ हिंदुस्तान का।
उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि वो जगह जहाँ से हिंदू रिवर बहती है, जो कि एग्जैक्टली सिंधु थी, और यहाँ के रहने वाले लोग हिंदू। तो हिंदुस्तान का मतलब वो जगह जहाँ पे हिंदू रहते हैं। इस हिंदू में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग आते थे। और ध्यान देने वाली बात ये है कि उस टाइम तक हिंदू धर्म आया नहीं था। हाँ, सनातन धर्म था जो आके जाके हिंदुइज्म के नाम से फेमस हुआ। उसके बाद ये हुआ कि ग्रीक्स इंडिया से ट्रेड करने आए, और ग्रीक्स की प्रॉब्लम में उनकी टंग थी, तो वो हिंदुस्तान या सिंधु बोली नहीं पाते थे। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में से और रिफॉर्म करा और उसका नाम इंडो, इंडस और इंडिया कर दिया। और आगे जाके जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इन्होंने उसे और रिफॉर्म करा और फाइनली हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। तो पहले भारत, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया। यही हमारी हिस्ट्री थी हमारे नाम के बारे में, कि हमारे देश का नाम इंडिया, हिंदुस्तान या भारत कैसे पड़ा था। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत कम कंट्रीज है पूरी दुनिया में जिनके दो नाम हैं। जैसे हमारे इंडिया के दो नाम हैं। पहला नाम ये है भारत, जो कि हिंदी में है, और दूसरा नाम इंडिया, जो कि इंग्लिश में है। यहाँ तक कि श्रीलंका ने भी अपने इंग्लिश नाम को ड्रॉप कर दिया था, जिसका नाम था साइलोन। वो आज भी अपना हिंदी नेम यूज करते हैं, श्रीलंका। तो यही कहानी थी हमारे नाम की, हमारे देश के नाम की। और उस टाइम भारत, इंडस या हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं हुआ करता था आज का। उस टाइम इसका मतलब था अखंड भारतवर्ष, जहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमारा भारत, हर सारी की बांग्लादेश, सारी कंट्रीज थे, जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे, सब भारतवर्ष का पार्ट थे। तो ये बहुत 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 बड़ा नेशन था उस टाइम। तो यही स्टोरी थी इंडिया के नाम की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Belief in an immortal individual soul. In Hinduism, souls are known as Atman. Actions of the soul while in a body have effects on that soul's next life. When you die, your soul moves to another new body. This is called transmigration. The kind of body the soul inhabits next is determined by karma. 3. Belief in karma. Karma is action, usually good or bad actions that affect society. For Hindus, karmic actions in the past affect us today, and our actions today affect our soul's future. 4. Belief in moksha. The goal in Hindu The caste system fell into place only 2000 years later, around 100 CE. It has to be explained as a political development rather than a religious or a scriptural development. And if you say it has to be understood as a political development, then you need to know what happened around that time in terms of empires, politics, ideologies, what changed. But it is reasonable to say, I think, there was a conflict between two ideologies within the idea community. One which was more, to use current day terminology, liberal and had no problems with mixing with people or in the way language is used. And the other that was more conservative, again to use a modern terminology, and had strong views about mixing and wanted language to be used very conservatively. So I think in the context between these two different approaches to how society ought to be organized, one of them prevailed around 100 CE. If you take a single village in India, the genetic difference within that village is 2 to 3 times higher than the genetic difference between North Europeans and South Europeans. So this is what caste system has done. It has increased
because it has divided society. And if you want to see the original Tukde gang, you have to go back around 2000 years ago. Brahmanical patriarchy. Wait. No, not this. Is it something to do with Hinduism or caste? What is Brahmanical patriarchy? Take these two words separately. Brahmanical and patriarchy. One means a need to maintain caste purity in society. The other, a need to control women. Combine these two and you get a basic understanding of the term. According to a 1993 essay by Uma Chakravarti, B.R. Ambedkar proposed that Brahmanical patriarchy can be smashed is intercaste marriage. Yes, a woman's freedom to marry outside her caste ends the power wielded by upper castes to oppress and further maintain the caste system. So this is why most caste-based violence we hear about is about intercaste marriages, right? When a Dalit man marries an upper caste girl? Exactly. That's Brahmanical patriarchy for you. So if you now see boycott Twitter calls or just general outrage, pause. Explain to them what Brahmanical patriarchy means. It's not just an academic term. It's all around us. And maybe it's time we do need to smash it. Krishna examines like a psychologist. And he gives reasons for them. He says, such a hatred for the Atman residing in other bodies, Mamatma Parategeshu, the Atman residing in other bodies. Why a person develops hatred for that is because of Ahankara, ego, extreme ego, Balam, strength, because I have the power, I have the strength, Darpam, because I am vain, I am conceited. Then Krodham, vengeance, Kamam, lust. You take any Indian village where there is a dominant caste and where there is a marginalized caste. The relation between these two jatis, when it becomes negative, if a social psychologist is to go there and really study the phenomenon, then he or she would come to the decision that the reason for such abusive relationships between communities is not because one community belongs to the Aryan and another community belongs to the Dravidian, but it is because of these 5 psychological reasons. So, if we use actual இவ்விவாகம் முடிந்தால் அவளது பெற்றோர் அவமானத்தை சந்திப்பார்கள். அவர்கள் நிலை அதை பற்றி சிந்தித்தீர்களா? அவர்களை அனைவரும் எள்ளி நகையாடுவார்கள். வாழ வழியின்றி தவிப்பார்கள். ஆனால் நான் மாறாக யோசிக்கின்றேன். தன் வாரிசுக்கு கிட்டிய ஆனந்தம் கண்டு பெற்றோரின் மனமானது என்றும் வேதனையுறாது. மாறாக மகிழ்ச்சியில் திளைப்பார்கள். மகளுடைய ஆனந்தமான வாழ்வினால் அவர்களுடைய தலை கவிழாது. தரணியில் தலை நிமிர்ந்து வாழ்வார்கள். தனது வாரிசு வாழ்க்கை துணையோடு ஆனந்தமாக வாழ்வது இன்றோருக்கு வேதனை அளிக்காது. அவர்கள் ஆத்மாவுக்கு நிம்மதி வழங்கும். No difference between men and women in Sikhism. Sikhism was among the first major world religions to make the radical suggestion that maybe, just maybe, women are people too. Women in Sikhism have fought battles, led religious services, and even acted as some of the longest reigning leaders of the entire community. Sikhism isn't based on doing things to get into some heaven or hell. Hell is just life on earth, which your soul is constantly reborn into after you die, which is pretty dark. You see, Sikhs believe in reincarnation and karma, similar to Buddhists, Hindus and Jains. But Sikhs believe that karma is modified by God, as in, karma might decide what life you're born into, but God makes sure that anyone can become a good person in their lifetime if they try. The goal of Sikh life is to break free from the cycle of rebirth by merging your soul back into God's soul. One does this by realizing that you are already a part of God. You just need to let go